Hello everyone, welcome back to the Margdarshak YouTube platform. So, as you people are aware that we are doing the quick revision series. In this series, as you are aware that we are doing the polity, and we are doing polity with the best thing for revision is the mind maps that we are using for our revision series. So, without wasting any further time, let's move toward the session. So, as you people are aware that we have already done with the part 40 till the part 40 of our constitution है ना. In that the part 14 says about the services under union and state. Next we are today moving toward the article of part 14a, part 14 clause a, है ना, that is mentioned about the tribunals. So basically tribunals we can divide into two parts, है ना. First is mentioned about under 323a, that is the administrative tribunals. Second is the article 323 b, that is mentioned about the tribunals for the other matters other than the administrative tribunals. So basically administrative tribunals only center and so center or union have authority to constitute the administrative tribunals, while the tribunals for other matters can be constituted by union or states, है ना. So you have to remember this can be asked, है ना, this can be asked in our upcoming examination. It has no doubt that this is not an important, this is very important topic that you have to remember. So basically let's move toward the article 323a, that is mentioned about the administrative tribunals. So that says about the पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एडजुकेशन ऑफ सर्विस डिस्प्यूट हो गया, फिर स्टेब्लिश करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर यूनियन स्टेट, स्पेसिफाई करता है जुरिस्डिक्शन पावर एंड प्रोसीजर, एक्सक्लूड कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 323 136. देन आफ्टर ट्रांसफर करता है पेंडिंग केसेस को, सप्लीमेंटल incidental and consequential provisions इसमें mentioned है. Next is tribunals for other matters, that is mentioned under article 323b, है ना. These mention about the appropriate legislature may provide for adjudication of dispute and offences. इसमें matters होते हैं taxation से हो गया, foreign exchange and import and export से related हो गया, देन आफ्टर इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट हो गए, फिर हो गया लैंड रिफॉर्म्स हो गए, देन आफ्टर अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग्स हो गए, देन इलेक्शंस एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 329 एंड 329A. Next we are moving to next include the foodstuffs and essential good controls. Next is rent regulation control, tenancy issues, other is offenses, fees related to these matters. Next is incidental matters. So these are part of the tribunals for other matters, है ना. The tribunals for other matter is other than the administrative tribunals. So next is in the article 323b is established hierarchy for tribunals, है ना. नेक्स्ट इज द स्पेसिफाई करता है जुरिस्डिक्शन एंड पावर प्रोसीजर्स, एक्सक्लूड करता है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, बट एक्सेप्शन है आर्टिकल 136 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना. सो नेक्स्ट इज ट्रांसफर करता है पेंडिंग केसेस को, सप्लीमेंट करता है इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस को. ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द पार्ट 15, दैट इज अबाउट द इलेक्शंस, है ना. सो without wasting time, let's move toward the election commission, that is mentioned in article 324. This is very important part of our constitution that you have to remember, because you may find direct question in every second examination of UPSC about the election commissions, about the elections. So please remember this. There are certain articles that you have to remember, that there are very limited articles in the elections, है ना. So you have to remember all of them. Okay, so election commission mentioned under article 324, it has superintendent and directive and control of the elections. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है. देन आफ्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करता है, वो नॉमिनेट करता है, अपॉइंटेड होता है ये सॉरी है ना. इसमें क्या कौन कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, है ना. चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन करता है इलेक्शन कमीशन को, है ना. चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है इलेक्शन कमीशन का. रीजनल कमिश्नर्स में बी अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशंस ओनली. हो गए कंडीशंस ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर बाय डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट्री लॉज. चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव करता है, लाइक है ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को ना रिमूव किया जाता है, वैसे ही इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है. अदर
on other election commissioner or regional election commissioner, regional commissioners removed by chief election commissioner recommendation होता है, staff provided by president or governor on the request होता है. Okay, electoral bond that is mentioned in article 325, very very important. It was in the news, it may be asked in your CAPF or CDS examination, that is going to be held in next month. Okay, so you have to remember this. Article 325, that is the one general electoral roll होता है for constituency का. No eligibility on the religion, race, caste and sex, है ना, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि इनके आधार पे कोई भी इन एलिजिबिलिटी नहीं होती, प्लेस ऑफ बर्थ से तो होती है. ओके, सो यू टू रिमेंबर. ओके, next is under article 326, that mentioned about the adult suffrage. So adult suffrage, that is mentioned in article 326, that mentioned about the elections of the house of people and state legislative assembly होता है. citizens of India, that is more than 18 years of age, है ना, can eligible for the elections. Basically it was earlier it was 21 years, but with the 61st constitutional amendment act, it was reduced to 18 years. So now a person who attend the age of 18, he can eligible to vote. Okay, next is the not disqualified non-residential unsound mind, crime, corruption practices. Okay, so next is the parliament power, power elections to elections to legislature, that is mentioned in article 327. Okay, so remember this. Next is state power, power related to election of the legislature, that is mentioned in article 328. Okay, bar to interfere, to interference of by the court in the electoral matters, that is mentioned in article 329. That is very very important, because there was like disputes related to that, and there is this article that is going to be in the news. Okay, so basically it is validity of delimitation or seat allocation laws not क्वेश्चन क्वेश्चन होता है. फिर हो गया इलेक्शन क्वेश्चन ओनली बाय द इलेक्शन पिटिशनर, है ना, हर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ओनली इलेक्शन पिटिशनर ही क्वेश्चन कर सकता है इलेक्शन से रिलेटेड. ओके, so next we are moving toward the next set of part, that is part 16, that mention about part 16, that is mentioned about the special provisions related to certain classes, है ना. So this mention about the like NC national commission for scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, women's. Okay, so women, so you have to remember these articles. They are very very important. You can use these articles in your essays and report writing, as well as in the arguments. Okay, so remember these articles very clearly. Okay, so basically article 320 330 mention about the reservation of seats for the house of people, that is for Lok Sabha. Okay, so basically reservation of seat hota hai, that is mentioned in article 323, 330, that is the scheduled caste, scheduled tribe except Assam autonomous district हो गया, scheduled tribe Assam autonomous district, proportion of the population, that is mentioned in article 330. That please remember article 330 is about the reservation of seats for house of the people. Okay, next is article 331, है ना, that is mentioned about the reservation of Anglo-Indian community, that is house of the house of people, that is mentioned in article 331. That मतलब कि now it is repealed, I think it is repealed. There is no representation of Anglo-Indian, है ना, and okay representation of Anglo-Indian community, that is also yes, it is mentioned in article 331. Okay, and next is the reservation of seats for legislative assemblies, that is mentioned in article 332. Okay, so that is the scheduled caste, scheduled tribe except Assam autonomous district हो गया, autonomous districts. Next is autonomous districts in Assam हो गया, proportion of the population. Okay, so this is mentioned in article 332. and representation of Anglo-Indian community legislative assemblies में, so it is mentioned in article 333. Okay, next is article 330, 334, that is the reservation and special representation cases, that mention about the SC/ST seats in the House of People and State Legislature, that is 18 years from commencement. Okay, next is Anglo-Indian representation, that is 70 years from commencement. So this is under article 334. You have to remember these articles. Next is claim of SC/ST to post
so SC ST to services and post, that is mentioned in Article 335. It mentioned about that it which is considered constantly with administrative efficiency होता है, provisions for. So it is about the considered consistency with the administrative efficiency, that is mentioned in Article 335. It also have provisions for relaxation in the qualifying marks and lowering standards. Okay, so basically है ना, जैसे कि होता है ना SC ST की कट ऑफ कम जाती है, so that is also, that is about the Article 33 30 30 335. Okay, so you have to remember this. Next is Article 336, that is about the special provisions for Anglo-Indian community in the service, that is appointment in the railway, customs, postal and telegraph services, decreasing reservation over 10 years. Okay, so next is Article 337, that is about the special provisions educational grants for Anglo-Indian community, that is mentioned in Article 337. Anglo-Indian community is not very important, please don't give it much importance. Okay, you have to remember the articles that related to SC ST and vulnerable class. Okay, so this is about the decreasing grants over 10 years. फिर consider condition होता है 40% annual admission for other communities. Okay, so next is Article 338, that is National Commission for SC, है ना, for scheduled caste, that is इसमें composition होता है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, देन अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा. इनकी ड्यूटीज़ होती है इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर एंड सेफगार्ड्स फॉर SC and inquire into depression of the right. Next is the advise and evaluate करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and make recommendations. Other functions for protection and welfare also, they take these type of actions. Okay, next is the power of civil court. They have the power of civil court. Okay, union state government to consult on major policy matters, like they can be in body of consultation for the union and state when there is in provisions related to SC. Okay, next is references to the HC including the Anglo-Indian community. Okay, so next is the National Commission for Scheduled Tribe, that is mentioned in Article 338A, है ना. 338 is mentioned about the SC, 338 is for ST and 338B is for OBC. Okay, backward class. So 338 A, that is about the composition. चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ड्यूटीज़ क्या होती है, इन्वेस्टिगेट और करता है, मॉनिटर करता है ST से रिलेटेड मैटर्स को, इंक्वायर कर इंटू कर है ना, मतलब कि देयर राइट्स, एडवाइस करता है, इवेल्युएट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है ऑफ देयर, प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, मेक रिकमेंडेशन, है ना. अदर फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर होती है. पावर ऑफ सिविल कोर्ट इनके पास भी होती है, अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट करती है मेजर डिसीजंस के लिए. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 338B, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, दैट इज कंपोजिशन वही होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ड्यूटीज़ करता है इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर करता है, सेफगार्ड फॉर स्पेशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, है ना. नेक्स्ट इज इंक्वायर करता है डिप्रेशन ऑफ राइट्स होता है, एडवाइस इवेल्युएट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, मेक रिकमेंडेशन, अदर फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर. नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ करता है, सिविल कोर्ट के पास इनकी राइट, इनकी पावर होती है, फिर उनमें यूनियन और स्टेट इनसे एडवाइस कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 339, है ना, that is mentioned about the control of union, scheduled area and tribal welfare. Okay, so it is about the president may appoint commission to report on administrative and welfare, and union executive power to give directions to state for ST welfare schemes. Okay, so next is article 340. Okay, that is appointment of commission backward class. Okay, appointment of commission for backward classes, that is as under article 339. It is president करता है, में appoint करता है to investigate condition of SC BCs. Okay, make recommendation for pro improvement grants होते हैं. Okay, scheduled caste, that is mentioned in article 341, that is about the president specifies SC's scheduled caste by public notification करता है, consulting governor of the state. So basically
पार्लियामेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट बाय लॉ. सो बेसिकली एस टीज को कौन है, मतलब कि कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है, पब्लिक नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. पार्लियामेंट के पास मतलब कि ये पावर है कि वो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकती है लिस्ट में से. ओके, so that is mentioned in article 341. You have to remember this article, quite important. Okay, next is article 342, that is about the scheduled tribes. That is president specify STs by public notification. Okay, consult करता है गवर्नर, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर that they can may exclude or include from the list. Okay, next is the socially and economically educationally backward classes, that is mentioned in article 242A. That is the president may specify SCBCs in state in central list. Okay, कंसल्टेशन विद द गवर्नर, पार्लियामेंट इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकती है. स्टेट यूटीज़ में प्रिपेयर और मेंटेन देयर ओन लिस्ट, यानी कि स्टेट और यूटीज़ के भी पावर है एस सी बी सी से रिलेटेड कि वो भी नोटिफाई कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 17. Part 17 of the Constitution, that is mentioned about the official language. So it is the language of the union. Let's move toward the language of union, that is mentioned in the article, so chapter 1. Okay, so it is about the article 343, that is the official language of union. Okay, so basically Hindi in Devanagari script होता है, international form of इंडियन न्यूमेरिकल्स, यानी कि 1 2 3 ये वाले न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं हिंदी में. देवनागरी जैसे हम लिखते हैं ना हिंदी में, हिंदी को देवनागरी, देवनागरी इज स्क्रिप्ट एंड हिंदी इज ए लैंग्वेज. ओके, सो स्क्रिप्ट देवनागरी, हिंदी को स्क्रिप्ट को देखो ऐसे लिखते हैं. ओके ओके, एंड नेक्स्ट इज द इंग्लिश कंटिन्यू फॉर फर्स्ट फॉर 15 years, देन आफ्टर इसको बढ़ाया गया धीरे 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 धीरे, है ना. में प्रोवाइड फॉर इंग्लिश एंड देवनागरी न्यूमेरिकल्स यूज आफ्टर 15 years, यानी कि मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर था कि वो 15 years के पास इसको बंद भी कर सकती है, एंड दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू इट फॉर फर्दर. बट गवर्नमेंट ने फर्दर कंटिन्यू किया इंग्लिश को. ओके, एंड इट इज स्टिल इन प्रिविलेंट इन द न्यूज इन द यूज. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 344, दैट इज द कमीशन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट. ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कमीशन और कमिटी होती है पार्लियामेंट की. दैट इज प्रेसिडेंट कंसल्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है कंपोजिशन 5 to 10 years आफ्टर कमेंसमेंट. ओके, रिकमेंडेशन ऑन द हिंदी यूज, इंग्लिश रेस्ट्रिक्शंस, language for article 330 348 numericals, communication language. Okay, committee of parliament, that is having 20 members from legislative assembly and 10 members from uh, 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha, examines the recommendation. Okay, president issue करता है direction based on the report. Okay, next is regional languages. Regional languages are mentioned in article 245, that is the official language of the state. Official language for communication, that is also under article 346. Next is the article 347, that is the special provision for education for a language spoken by section of population, that is mentioned in article 347. Okay, next is chapter 3, that is language of the Supreme Court or High Court. Okay, so remember these, this is asked in PYQs. Okay, remember this. Okay, so language in Supreme Court or Supreme Court, High Court Act bill, that is mentioned in article 348, that is the English for all proceedings until Parliament provides otherwise. Okay, Parliament के पास power है. English for authoritative texts such as bills, acts, ordinance, orders and rules. Governor may authorize Hindi and other state languages in the high court proceedings. There with the president consent होता है. Translation of state law in English deemed authoritative. Okay, next is the chapter 4, that is special directives, that is the language for grievance redressal, that is mentioned in article 350. Next is 350A, that is the facility for instruction in mother tongue, that is for primary stage in the education. Next is article 350B, that is the special officer for linguistic minorities, that is mentioned in article 350B. remember this, very very important. स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मेंशन कौन से आर्टिकल के अंदर है, दैट इज 350B. रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 351. ओके,
So next is we are moving toward the emergency provisions. Emergency provisions that is mentioned in article 18, part 18 of the constitution. Remember this, कौन से part में mention है, part 18 में mention है. First is article 352, that is the proclamation of emergency. This threat to basically कि कौन कौन से ग्राउंड पे करता है, पहले थ्रेट टू सिक्योरिटी बाय वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, है ना. सो बेसिकली ये पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, फिर इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, एंड कैन बी फॉर होल एंड फॉर पार्ट, यानी कि ये फॉर ना फॉर एनी पर्टिकुलर पार्ट और फॉर एनी फॉर द होल कंट्री, क्या कहीं पे भी लग सकती है. कैन बी मेड बिफोर एक्चुअल अकरेंस, है ना. मतलब कि अगर डेंजर एमिनेंट डेंजर हो या फिर फ्यूचर में कुछ दिक्कत आने वाली हो, देन मतलब कि बिफोर, मतलब एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह भी इनको यूज़ किया जा सकता है. कैन बी वेरीड और रिवोक, यानी इनको कभी भी रिवोक किया जा सकता है. रिक्वायर करता है यूनियन कैबिनेट की रिटर्न डिसीजंस को, रिक्वेस्ट को, लेड बिफोर ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सीजेस 1 month अनलेस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज. यानी कि अगर है ना बोथ हाउसेज हैं, एक मंथ में 1 month में अगर है ना ये है ना पास नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, देन इट इज द इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड. ओके, automatically null and void. Next is the approved proclamation. Seizes 6 months, extendable होता है. Revocation if the House of People disapproves. Okay, so that is about Article 352. That is the national emergency. Okay, remember this, very very important, एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल 353, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो ये वाले भी याद रखना, मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं डायरेक्ट वाले. यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू स्टेट डायरेक्शन, है ना. पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज इवन ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर्स. ओके, एंड एक्सटेंडेबल to other state if security threats, that is also mentioned in article 353. यानी कि इट मेंशन अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पावर टू एक्सटेंड, मतलब कि स्टेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट के से रिलेटेड में लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड. एक्सटेंडेबल टू द अदर पार्ट, यानी कि इफ रिक्वायर्ड होता है, देन इसको अगर है ना मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगाया गया तो उसको मतलब कि एक्सटेंड किया जा सकता है दूसरे पार्ट के लिए ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 354, that is about the application of revenue distribution provisions of during emergency, mentioned in article 354. Next article 355, that is the duties of union to protect state from external and internal acts. Okay, next is article 356, that is the failure of constitutional machinery in the states. Remember this, very very important, यहाँ से statement based question आते ही आते हैं, है ना. In every second examination or every 2 years you will find direct question from the emergency portion, so please remember this very very clearly. यहाँ से statement question best question आएगा and you will going to be in the trap. Okay, so basically article 356 says about the president satisfy governor report or otherwise, है ना. So basically next is assume state government functions and power except the high court, यानी कि हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकता, बट वो ना स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले मतलब कि ले सकते हैं. ओके, डिक्लेयर करता है स्टेट लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइजेबल बाय पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, ये डिक्लेयर करते हैं. इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस होते हैं, कैन बी रिवोक्ड और वेरीड, लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सीजेस 2 month अनलेस अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज, अप्रूव्ड प्रोक्लेमेशन सीजेस 6 month, मैक्सिमम 3 years के लिए बढ़ा सकते हैं, बट एक टाइम में 6 months के लिए, है ना. कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूएशन बियॉन्ड 1 year. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव powers that is mentioned in article 356 proclamation. Okay, that is mentioned in article 357, that है ना. So next is the suspension of article 19 during emergency, that is mentioned in article 358. Please remember this can also be asked in your examination. Okay, so it is that during war, external aggression and emergency, and the state not restricted by the article 19, law ceases effect because when proclamation end, applicable if even if emergency is part of India does not apply to laws without recital of emergency. Okay, next is article 359, है ना. important suspension of enforcement of
part 3, that is mentioned about the fundamental right during the emergency. That is, the president may order suspension, may order suspend the right to move the court, that is mentioned in article 20 and 21. State not restrict by those rights. Law cease effect when order end होता है application, even if emergency is part of India, and does not apply to laws without recital of emergency. Okay. Next is the financial emergency, that is mentioned under article 360. Okay. So that is, the president satisfy financial instability, credit threat, okay, can be revoked होता है और वेरिड करता है, laid before both houses of parliament, ceases 2 months unless approved by the both houses. Union executive extend to state financial directions होता है. Directions may include salary reductions, okay, state union including supreme court and high court judges. ये वाला आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की सैलरी डिक्रीज होती है कि नहीं होती. सो इट इज़ going to be decreased in the situation of financial emergency. So next is money bill reserve for president's consideration. Okay. So basically financial emergency है वो अभी तक कभी नहीं, अभी एक बार भी नहीं लगती. एंड नेशनल इमरजेंसी दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 352, ये ताना 3 टाइम लग चुकी है. एक 1962 वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे, 1965 दैट इज ऑल्सो अबाउट द वॉर और एक्सटर्नल, 1975 दैट इज ऑल्सो दैट इज अबाउट ना लाइक ना दैट इज द आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. ओके. सो एंड जो स्टेट इमरजेंसी वो मल्टीपल टाइम्स लग चुकी है, बहुत ज़्यादा बार, मोर देन 100 टाइम्स. ओके, इन द डिफरेंट स्टेट्स. ओके. Next we are moving toward the miscellaneous articles, that is mentioned in article 9 part 19 of the constitution. Okay, so these miscellaneous articles, let's move toward these miscellaneous articles. That is article 361 है ना, 361 that is about the protection of president and governor not answerable for the court to the court for official act होता है, conduct reviewable for article 61, for article 61 impeachment, no criminal proceedings during terms होता है, इनके terms होता है, civil proceedings इन पे चल सकती है, no arrest or imprisonment process during the emergency, during their term, and civil proceedings require 2 months notice for personal act. Okay, so that is also about the article 361. It is the immunities of the president and governor. Okay, so now next is article 361A है ना, that is the protection of publication of proceedings. Okay, it mentioned about the newspaper report of parliament, state legislature proceedings protected unless malicious है ना, protection of public publication of the proceedings, that is mentioned in article 361. You will going to find direct question from these session, these articles. Miscellaneous वाला part है 19, part 19 में mention है. You have to remember this because these are asked multiple times in repeated way in previous year papers. Okay, and it can be asked in your examination. So next is article 361A, that is the newspaper report for parliament or state legislature proceedings protected unless malicious, does not apply to secret sittings होता है, applies for broadcast report होता है. Disqualification of remunerative political post, that is mentioned in article 361, that is the disqualified under 10 schedule, also disqualified from remunerative political post होता है. Duration होता है from disqualification until the term expiry or elections. Next is article 363, that is bar of interference by the court, treaties and agreement, that is no court jurisdiction is in dispute from pre-constitutional treaties with the Indian state. Okay, next is article 363A, that is the ruler of Indian state recognition previous abolition, that is mentioned in article 363A. Okay, next is article 364, that is the special provisions, major port or aerodromes, that is the president may direct application modification of the law defines major ports and aerodromes, that is mentioned in article 364. Next is effect of failure to comply with the union directions, that is also mentioned in article 365. Remember this. Article 366, that is the definition है ना, so remember this.
अबाउट द एग्रीकल्चरल इनकम एंग्लो इंडियन होता है, आर्टिकल्स होता है, बोरोविंग एंड लोन होता है, क्लोज होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, फिर करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस, स्टेट स्टेट इंडियन स्टेट एंड स्टेट्स, डेबिट चार्जेस होता है, स्टेट ड्यूटीज होती है, एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं, फेडरल लॉज होते हैं, कोर्ट होते हैं, फिर गुड्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, फिर गारंटी हो गई, फिर हाई कोर्ट हो गए। देन आफ्टर इंडियन स्टेट हो गए, पार्ट हो गया, पेंशन हो गया, फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पब्लिक नोटिफिकेशन हो गया, फिर रेलवे हो गया, फिर रूलर्स हो गए, फिर शेड्यूल हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, फिर हो गया सिक्योरिटीज सर्विसेज, स्टेट फॉर जीएसटी काउंसिल हो गया, फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो गया, सब क्लोजेज हो गया, टैक्सेशन एंड ड्यूटीज हो, टैक्स हो गया, फिर हो गया टैक्स ऑन इनकम हो गया, टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो गया, फिर यूनियन टेरिटरी हो गया। बेसिकली इनकी डेफिनेशन मेंशन इन आर्टिकल 366। ओके, next is article 367, that is interpretation. Okay, that is interpretation. Okay, so it mentioned about the general clause act, that is art act 1897 applies है ना, reference to act or law include ordinance, foreign state definition होता है। Okay, so next is the part 20, that is the amendment of the constitution. Okay, it mentioned in article 368, there is the power of parliament to amend the constitution. It is the constitution a constituent power to amend by adding addition, variation or repeal, initiate by the bill in either house। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल होता है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड द 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो सकता है। प्रेसिडेंट एसेंट रिक्वायर्ड होता है, एंड रिक्वायर्ड होता है रिक्वायर्स होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट फॉर स्पेशल प्रोविजंस। ओके, these special provisions are presidential election and manner. Remember this, these are very very important, asked multiple times in the previous year paper, previous year questions. So if you have seen the previous year papers, then you will not going to miss it at any cost। Okay, so next so these are mentioned about the president election and manner, यानी कि इनके लिए आपको स्टे हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन मतलब की जरूरी होगी, नीड होगी। ओके, सो बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन और मैनेज से रिलेटेड, फिर एक्सटेंड टू यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, फिर हाई कोर्ट फॉर यूटीज हो गया, फिर है ना जीएसटी काउंसिल, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 369, फिर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, दैट इज यूनियन जुडिशरी हो गया, चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6, दैट इज द स्टेट कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हो गया, चैप्टर 1 ऑफ द आर्टिकल पार्ट 9, दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो गया, लिस्ट इन द यूनियन सॉरी 7th शेड्यूल हो गया, फिर हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368। ओके, itself। ओके, so these are like need one half of the state of the 50% of the states require rectification। Okay, so it article 13 does not apply to the to amendment है ना। next is no limitation, article 13 mention about the judicial review है ना। next is no limitation on the constituent powers। Okay, next we are moving toward the part 21, that is temporary transition and special provisions, that is let's move toward the article 369, that is the temporary power of the parliament, that is mentioned in the article the state list matters, यानी कि provisions not applicable for JNK होता है। फिर हो गया पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग पावर लिमिटेड होती है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 अप्लाई करते हैं JNK, बेसिकली इसको हटा दिया है, ये पहले का डाउट है, प्लीज रिमेंबर दिस, JNK के लिए नहीं करता। अदर प्रोविजंस अप्लाई टू विथ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन, प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है, ऑर्डर कंसल्टेशन कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर आर्टिकल 370 सीजेस मॉडिफाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिकमेंडेशन। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 371 क्लोज 2 है ना, that is mentioned about the president may provide special responsibility to governor होता है for Maharashtra and basically okay, so here 372, that is the special provision for Maharashtra, that is this ये प्रेसिडेंट करता है ना, मतलब मे प्रोवाइड करता है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नर करता को होती है।
सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड होता है फॉर विदर्भा, मराठवाड़ा, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ एंड रेस्ट ऑफ द गुजरात. ओके. इक्विटेबल फंड एलोकेशन होता है, एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 371 से रिलेटेड जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर देम. ओके. Next is Article 371A, that is about the Nagaland, that is mentioned about the Nagaland, that is the Parliament Act on the Naga practices. It was asked in exam the previous year papers, so please remember this. Parliament may act on the Naga practices, laws, land, justice require legislative assemblies resolution. Okay. Governors special responsibility for law and order. नेक्स्ट इज गवर्नर इंश्योर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फंड इंक्लूडेड इन ग्रांट डिमांड. रीजनल काउंसिल फॉर ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट होता है. फिर होगा ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर फॉर 10 years होता है. गवर्नर डिस्क्रिप्शन ऑन ट्यूनसांग मैटर हो गया. नेक्स्ट आर्टिकल 371B, दैट इज मेंशन अबाउट द आसाम. 371C, दैट इज अबाउट द मणिपुर. 371D, that is Andhra Pradesh and Telangana. 371E, that is special establishment of Central University in Andhra, that is about the E, है ना. Next is 371F, that is mentioned about the Sikkim. Mizoram, for Mizoram it is G, है ना. For Arunachal Pradesh it is for 371H. H यानी कि remember by the height. मिजोरम को आपको G और Z से याद रख सकते हैं, है ना. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ओके. ई से आप यूनिवर्सिटी याद रख सकते हैं. सो इसको आपको ए से याद रख सकते हैं. मतलब ए से आप नागालैंड, है ना. बी से आपका कौन सा हुआ, आसाम. सी से कौन सा हुआ, है ना. सी से हुआ आपका मणिपुर. डी से हो गया आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, है ना. डी को आपको दो से याद रख सकते हैं. डी को दो याद रख सकते हैं. दो कौन से होंगे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर आंध्र प्रदेश, यानी कि यूनिवर्सिटी को ई से याद रख सकते हैं, दैट इज अबाउट 371E. सिक्किम को आप एफ से, यानी कि एक मतलब कि पहले एक है ना इनको, ये एक है ना, मतलब कि इंडिया का पार्ट नहीं थे ये. 34th 35th वाले अमेंडमेंट से पार्ट बने थे, उससे मतलब कि इसको याद रख सकते हैं. एफ से फेल्ड, यानी कि सिक्किम फेल्ड. आई डोंट वांट, मतलब कि आई हैव नो इंटेंशन टू hurt anyone's sentiment, but I'm just giving you some short tricks that you can remember this in an examination. If you feel hurt, then please don't listen this, you can skip this. Okay. मिजोरम हो गया, that is G और Z से हो गया मिजोरम. H हो गया हाइट अरुणाचल प्रदेश हो गया. G गोवा, दैट इज आई, यानी कि मैं मतलब कि गोवा में जाके आई फील माई सेल्फ, दैट इज अबाउट द गोवा. देन आई से आप है ना गोवा याद रख सकते हो, यानी कि आइस, बियर के कप में आइस डालनी है, दैट इज कहाँ पे डालनी है, गोवा में. ओके. नेक्स्ट इज जे. जे इज अबाउट द कर्नाटका. ये लास्ट वाला बचा है, यू कैन रिमेंबर दिस. ओके. Next is Article 372, that is the continuance in force of existing law and adaptation. That is the existing law continues unless altered or repealed. President may adopt laws of to constitutional provision. Next is Article 372A, that is the power of president to adopt laws. Article 373 about the preventive detention power of the president. Okay. On the matter of the preventive detention, that is mentioned in Article 372, 373. Okay. Next is the provisions for federal courts and for court judges and proceedings, that is mentioned in Article 374. Next is Article 375, that is the court authorities officers to continue, that is mentioned in Article 375. Next is Article 376, that is the provisions related to High Court judges. Article 377, that is the provisions related to CAG. Article 378, that is the about the Public Service Commission, provisions related to them. Next is the special provisions for Andhra Pradesh Legislative Assembly duration, that is mentioned in Article 371A. Next is the power of President to remove difficulties. Okay. So that is also mentioned about the 392, Article 392. Okay. So next is the part 22. Let me just open it again. Let me just open it.
So next is part 22, है ना? दैट मेंशन अबाउट द शॉर्ट टाइटल्स हो गया, कमेंसमेंट हो गया, फिर ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील हो गया. सो यहाँ पे हो गया 393, दैट इज अबाउट द शॉर्ट टाइटल्स. 394 हो गया फॉर कमेंसमेंट. 394 ए हो गया फॉर ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज हो गया. एंड 395 हो गया रिपील्स हो गया. ओके, so that is all about the articles. So I hope you learned from this series, because I can guarantee you that you will find directly 5 to 7 questions in your examination. I'm guaranteeing you with this, because I had an experience, lot of experience with the UPSC papers, and I have experienced these problems that students face, because they have bulky books. They read 8,800 pages, but they skip this four page or 5 pages notes, and because of that they lose marks in the polity. They feel that कि polity, वो कहते हैं ना, polity look easy, but it na, when you go and na, like do the paper, solve the paper, you will find that you will losing the maximum marks out in the polity. Okay, that is because we have a lack of the issue, a lack of knowledge about the articles. Okay, and we do lack of the like lack of notes that is required for last minute revision, because polity has lot of articles, and you have to remember these all the articles, you, because they can be asked in one or another form. Like we provided you about the some description. This question can be asked about this description also. So that is why it took me a lot of time to create the mind map on these things. You can see the hard work that I have put it in towards this mind map. So please, you can download this from the Telegram channel, that the link will be provided in the description box. So please do revise them clearly, the 2 to 3 times, and also try to watch the video, or if you are not able to recall it from in first attempt, then try to revise the video again, so that when you read it again, it will be go in your subconscious mind. Okay, so that is for today. We will we will meet tomorrow with the next set of video. Okay, so jai hind for tomorrow. Jai hind for today.